देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। Very good morning to our principal, Reverend Father Roshan De Silva, our chief guest, Reverend Father Joseph Darbre, our parish priest, Reverend Father Rafi Vallachera, our headmistress, Reverend Sister Sophia Darbre, respected teachers, and my dear friends. I, Diya Datta, and I, Saksham Pradhan, take this opportunity to welcome you all on our 78th Independence Day celebration. This is one of the most important and auspicious occasions for every citizen of India. It was today, on 15th August, when India broke out with freedom from the British rule in 1947. We are so lucky that we were born on this land. it is our privilege to introduce our esteemed chief guest, Reverend Father Joseph Darbre, who was born to late Mr. Simon Darbre and late Mr. Santan on December 26, 1962 in Vasai, Mumbai. He has pursued his early education from Holy Cross High School, Nirmal, Vasai. Later, he acted as the principal of St. Dominic School, Mathura, and St. Clair Senior Secondary School, Agra, Kent. Then, on July 1, 2009, he was appointed as a rector at St. Lawrence Minor Seminary. At present, he is the VG of the Archdiocese of Agra and the parish priest of St. Mary's Church, Pratapura, Agra. It is an absolute pleasure to have you among us, dear Father. Now, I would like to request Ma'am Fiona and Sir Abhishek, along with Blue House Captain Miss Simran Ghai and Vice Captain Master Ayush Pal, to present the bouquet and card to the guests. Thank you, ma'am and sir. A flag doesn't fly because of the wind. It flies because of every breath of a dying soldier. It is time to hoist our national flag and
when we hear the melodious song sung by our friends. It was really a well-synchronized performance. Independence Day holds a great importance for all of us. So, here we invite Anya Gupta of Class 9C to deliver a speech. Freedom in mind, faith in the world, pride in the soul. Good morning to one of our people here. Indian Independence Day holds a great importance. As accountable citizens, let us promise to do everything in our power to advance and build our cherished nation. Let us defend the values of democracy, equality, and justice in remembrance of the sacrifices made by our freedom warriors. Let's celebrate our freedom on Independence Day. But let's also keep in mind our obligations and responsibilities to India's future. Together, we can make India a nation that excels internationally and continues to inspire the rest of the globe. Jai Hind. Have you seen this? Our Indian Army has conducted a successful surgical strike. Oh, really? That's great. Here is a letter. Asma? Asma! Where are you? Come here quickly. What's the matter? Why are you so upset? Wait, you will be upset too. Let her come. Asma! Yes, Dad. What's the matter? What is it? You had applied to join defense? What? How could you even think about it? She had appeared for the exam and this is her appointment letter. Asma, is it true? You had gone so far without informing us. Mom, Dad, I knew you won't permit me to pursue my dreams. I had always wanted to serve my country. There are many other ways to serve your country. Go for IAS, IPS and serve your country. But Dad, I want to become a frontline warrior. I'm passionate about the zeal, attitude, uniform and the valor. Asma, please understand, you are all we have. How can we consent to send you to face death every day? If I were a boy, would you say the same? You would be proud of me, right? It's just because I'm a girl, you're not ready to send me. Yes, you are right. Defense is not for girls and I will never send you. Asma? Asma? Where are you? Asma? Oh my god, what is this? Dear Mom and Dad, please forgive me for disappointing you. You left me with no choice. I had to leave. I want to be in the Indian Army. It's my only dream since childhood. I wish you could feel proud of me. I will miss you a lot. Bless me so that I can become a brave soldier, not less than any boy. With love, your disobedient daughter, Asma. Asma! What is it? Why are you crying? See this. Our Asma has left. She is gone. Our daughter is gone. Please bring her back. No, I won't. She has left the house without our consent. She has to come back on her own. You don't worry. Do you think military training is easy? She will come back soon. Let her face the reality. She will be back. Boys and girls, welcome to the Indian Army. Thank you, sir. Tomorrow onwards, intense training will start. You will get your agenda by tonight. Remember, there is no mercy for anyone during training. Louder! Stand at ease.
sir, this is Azma Malik. I'm also part of this camp. Oh, really? But you are late. I'm sorry, sir. I have come a long way. Show me your appointment letter. Is this a joke? And you are expecting to join the army with this seriousness? Please, sir, allow me to join the camp. I have left everything behind only to join the camp. My father didn't consent to let me come here. I have left my home. Please give me a chance. I will not disappoint you. Okay, I will see you for a month. If you can prove yourself, you will be a part of this camp. Thank you, sir. Group, I will see you all tomorrow. Be ready for the training. Dismiss now. Copy, sir. So, delicate darlings, are you going for this tough training? Leave it, yaar. They will run away in 3 days. You are wrong. They will run away in 2 days. Challenge. Challenge. Look at them. How will we survive here if they behave like this? I'm really nervous. Shall we quit? I'm also doubtful they will not let us survive here. No, I won't quit. I'm fighting with it at my home also. Why shall we give up? Just because these men think that we are weak? We can't be the frontline warrior? If we quit, they will win. I will try till my last breath. I want to break this taboo. We are also with you. Asma kept her promise. She didn't keep any stone unturned to complete her training. She tried and tried and tried. She fell, but only to stand up again. She didn't give up. इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरेबा पकड़ के पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के आसमां की हद से गुजर के हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को चल रहा है तू, लोहे का चल रहा है तू की शमशीरों से भी हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदेया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह बंदेया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह बंदेया, हर मैदान Hello? Mom, Asma, how are you, my child? I'm perfectly fine, Mom. How are you and Dad? We are also okay. I am always worried for you, and so is your dad. I know, Mom. I am sorry for what I have done. But can I request you something? This 15th August, can you and Dad come here at our camp? Please, Mom, please come. This Independence Day. Okay, I will try to convince your dad. Okay, Mom. I will eagerly wait for you. Bye, my child. Bye, Mom. I love you both. Come, this way. Stand here. But where is our daughter? Can you see her? No. Excuse me, are you Azma's parents? Yes, sir. Major KP Singh,
Commander-in-Chief. I am Azma's mentor. Oh, hello, sir. Where is our daughter? Is she okay? She is perfectly alright. She has successfully completed her training. She is the best of the troop. There she is. We always think big for our sons, and the dreams of our daughters are often torn off. Like this. Our daughters also need encouragement, but we fail to believe in their dreams. Yes, sir, you are right. I was wrong. And today I can say without any doubt, I am proud of her. We are proud of her. चिंगारी सिद्ध से जुनू तक है जाना हर कतरा बोल रहा मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी सिद्ध से जुनू तक है जाना हर कतरा बोल रहा छल्ला फिरते बन के कफन जब तुरिया तन के मौत नू बाचा मारे थर थर कंबदे सारे छल्ला फिरते बन के कफन जब तुरिया तन के मौत नू बाचा मारे थर थर कंबदे सारे आज से अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी जान को चाहे चलनी कर दो मान को ना छूने दूंगी आज से अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी जान को चाहे चलनी कर दो मान को ना छूने दूंगी छू के देखो दिल मेरा तुम्हें दिल में अपने भर लूंगी पर छेड़ के देखो तुम मुझको मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी तुमको नहीं छोड़ूंगी को चाहिए ना कोई जगे दा जोश तूफानी जगे नू चढ़ी जवानी ओ जग्गा सुन न किसी की के जग्गा कर मनमानी जगे दा जोश तूफानी जगे नू चढ़ी जवानी ओ जग्गा सुन न किसी की के जग्गा कर मनमानी जग्गा जिते मिलन
इतिहास का मैं आईना हूं, तहजीब का रंग सुनहरा हूं। गंगा जमुना मेरी आंखें, मैं नए भारत का चेहरा। मैं कल भी था, मैं आज भी हूं, मैं नवयुग का अंदाज भी हूं। सारी दुनिया का घर मुझ में, इस मिट्टी का आदर मुझ में। मैं देशभक्त भी गहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा, मैं नए भारत का चेहरा। हमें देखनी है आजादी हर हाल में, हमें देखनी है, हमें देखनी है आजादी। हमें देखनी है आजादी हर हाल में, हमें देखनी है, हमें देखनी है आजादी। मिट जाएगा नाम इस जुल्मत का, लहराएगा परचम मोहब्बत का। मिट जाएगा नाम इस जुल्मत का, लहराएगा परचम मोहब्बत का। शहरों शहरों गाँव गाँव में, हमें इश्क आबादी देखनी है, हमें सुबह आजादी देखनी है, हमें देखनी है आजादी। 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए कितने क्रांतिकारियों ने अपनी जान की आहुति दी, ये तो आप सब जानते ही हैं। आज़ादी से पहले देशवासियों की क्या मांगें थीं, ये हम आपको अपने नृत्य के माध्यम से दिखा ही चुके हैं। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि आज़ादी का जश्न अलग अलग राज्यों में कैसे मनाया जा रहा है। आइए आपको ले चलते हैं कश्मीर की हसीन वादियों में, जहां आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। बुम्बरा बुम्बरा शाम रंग बुम्बरा, बुम्बरा बुम्बरा शाम रंग बुम्बरा। आए हो किस बगिया से हो तुम, भवरे ओ शाम भवरे खुशियों को साथ लाए, मेहंदी की रात में तुम लेके सौगात आए। हो काजल का रंग लाए, नजरें उतारने को, बागों से फूल लाए, रस्ते संवारने को। काजल का रंग लाए, नजरें उतारने को, बागों से फूल लाए, रस्ते संवारने को। आओ मेहंदी की छाँव में गीत सुनाए, झूमे नाचे साज खाए, जश्न मनाए। बुम्बरा बुम्बरा शाम रंग बुम्बरा, बुम्बरा बुम्बरा शाम रंग बुम्बरा। आए हो किस बगिया से हो तुम। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ओर ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਹੋਤਸਵ ਬਹੁਤ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਰੇ ਨਾ ਲੰਮਿਆਂ ਰੂਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਖਣਾ, ਦਿਲ ਜੱਟੀ ਦਾ ਵੇ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਸਖਣਾ। ਮੇਰੀ ਸੌਂਕੜ ਟਰਾਲਾ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਿਆ, ਸੌਂਕੜ ਟਰਾਲਾ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਜੋ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੁਸਨਾ ਦੀ ਪਰੀ ਦੇ। ਸੋਹਣਿਆ ਕਦਰ ਕਰੀ ਦੀ ਨਖਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਪਿਆਰ ਸੋਹਣਿਆ। ਕਦਰ ਕਰੀ ਦੀ ਨਖਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਦੇ, ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਪਿਆਰ ਸੋਹਣਿਆ। ਕਦਰ ਕਰੀ ਦੀ ਨਖਰੇ
पैसे ज्यादा दे दूंगी मैचिंग कर देगा तो दस दे सुन ला भी डिट्टू सिम चाहिदी आला फोटो भी फरारी लाल दी चुन्नी मेरी रंग दे ललारिया ये चुन्नी मेरी रंग दे ललारिया मेरे यार दी गड्डी दे नाल दी चुन्नी मेरी रंग दे ललारिया ते मेरे यार दी गड्डी दे नाल दी उन्ना पंगे लगदे आ ओनू चंगे लगदे आ ताही सोचा कुंडा पवाला सोचा शरियाम हो जा सोचदियां ना मैं ओदा गुੱਟੀ उत्ते टैटू बनवा लवा सोचदी फिटाल दी मैं फैंटम दे नाल दी मैं एक होर कुर्ती सवार वा ओनू देख के तां मेरी हो जवे उम्र वधी दे नाल दी ये चुन्नी मेरी रंग दे ललारिया मेरे यार दी गड्डी दे नाल दी चुन्नी मेरी रंग दे ललारिया ते मेरे यार दी गड्डी दे नाल दी थारो खड़ो खड़ो स्वागत छू मारे चोखो देश राजस्थान में जहाँ का आज़ादी का उत्सव घणे हर्षो उल्लास से मनाओ जावे है। हाथा जुड़ लो पेरी पैसा नैना का जल सारो राज जो धानारी चूनर माथे सुखरो सूरज उग्यो आज सज दज गोरी घूमर काले सारो जग मुस्कावे आज सारो जग मुस्कावे आज मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंग है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो हर ठुकराए की शरण स्थली बन जाता है और 7 समंदर पार परदेशियों को भी अपने भाई और बहन कहकर बुलाता है। यही प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली 7 रंग। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली 7 रंग। धानी पगड़ी पहने मौसम है नीली चादर ताने अंबर है, नदी सुनहरी हरा समंदर है रे सजीला। देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। हो मारे या कोई मारे ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है। ऐसे हैं चाहे वैसे हैं, अरे जो भी हैं जैसे हैं, खुद पे हमें नाज है। जाने ना हमको ये जमाना, चाहो तो हमको आजमाना।
करते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले, हर जीत छीन ले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे। Thank you. So, Asma, baby Asma, come. Give her a big round of applause. Yes, if I'm happy, please come from the stage. This is our freedom. She made a choice to join Indian Army. Give her once again big round of applause. Thank you. This is what is the dream of our country. Freedom, we are celebrating it on 78 years of our existence in our country. We start 79th Independence Day, but with the note that freedom is the choice. You have to make a choice. And that's why today you have ample choice to make your life. You can make it, you can buy it. It's all left to you. If you make the right choice, you have a better future in life. If you make the wrong choice, then you will destroy your life. Life is God gives to us. Teachers are the mediator and the nurturer and the instrument to grow and to nurture you in your life. If you not step into a right thing, so naturally, probably, you may not get what you require in your life. And you are in your right hands. Respected principal, vice principal, the bride's priest, my dear teachers, and my dear students. We have come to celebrate 178th Independence Day. On this occasion, we greet each other and we wish that this celebration should bring happiness within us. These celebrations not only in the school, when we go back at home, carry that zeal and enthusiasm with you. If you don't carry it, that means you are not enjoying the independence celebrations in your school. And school is the place where you are called to celebrate because all the religion, all types of students, all castes, all walks of life come to the school to grow and to celebrate. Thank you for giving me this opportunity to be a chief guest. Thank you for your valuable presence. And thank you for the good house teachers we have arranged this program. Congratulations. God bless. Thank you, Father. Gratitude is happiness double, and no duty is more urgent than giving thanks to those who are there to support. I would like to call upon Samaya Singh of Class 10C to propose the vote of thanks. A warm and graceful morning to our most valued and honorable chief guest, Reverend Father Joseph Dowry, our principal, Reverend Father Roshan Silva, our parish priest, Reverend Father Rafi Valachira, headmistress, Reverend Sister Sophia Dowry, my worthy teachers, and my dear friends, and everyone gathered here. It's a privilege to propose a vote of thanks and acknowledge the contribution of those who worked really hard
We are glad to announce the results of today's march past competition. The first position goes to Yellow House. The second position goes to Green House. And the third position goes to Blue House. Congratulations to all of the winners. We have finally arrived at the end of today's program. It was excellent to see how so many of you have participated in this journey.